Hello everyone, welcome to Math Smart Tips. In this video, we are discussing two important function, that is the greatest integer function and the least integer function, which is also known as floor function and ceiling function. So these two functions are very important for to study real analysis and other topics which is related to function mainly. So let's start the video, and before starting the solution, I am requesting you to all those who are new in my channel, please like the video, comment if you have any doubt in the comment section below, and don't forget to subscribe the channel. So the definition of first, the greatest integer function, this is also known as box function, you can say, and it is also known as step function, this one. So the definition is, let f from R to R be a function defined by fx equal to box x, this is equal to n, which is an integer for all n less equal to x less equal to n plus 1. So this is the main definition of the greatest integer function, where n belongs to natural number. Box x denotes the integral part of x which is nearest and smallest integer to x. So these two words are very important. One is nearest and another one is smallest. Also, it is known as floor of x. The domain of f is a set of real numbers and the range of f is the integer, set of integer. That means the domain is real number and the range set is the set of integers. Now we see the graph of these functions to understand it properly. So this is the graph of a box function, or you can say it is a step function. So box x means if we take a value between 0 to open interval 0 to close interval 1. Sorry, this is open closed 0 and open 1. So if we take any value in between this, that means if we take 0.7 or 0.5, then if we take the box function of that function, this gives the nearest and the, here it says the smallest and nearest integer. So smallest and nearest integer means here it is 0. Also you can take this means 0.5, this is also equal to 0. If you can take any number in between 1 to 2. If we take 1.2, then the box of 1.2 is equal to 1. That is the nearest and smallest integer function. That means if we take box x, then if box x is equal to 1 when the x belongs to 1 less equal to x less than 2. So up to 2, but 2 को ये टच नहीं करेगा फंक्शन. सो दिस इज द ग्राफ. सो 1 से स्टार्ट करके 0 से स्टार्ट करके 1, बट 1 में ये टच नहीं करेगा. ये जो हॉलो वाला कंप्लीट सर्कल है, ये इंडिकेट करता है इंक्लूड द पॉइंट, एंड ये जो हॉलो वाला सर्कल है ये इंडिकेट करता है यहाँ पर एक्सक्लूडेड द पॉइंट, एक्सक्लूडेड और एक्सक्लूड. सो दैट पॉइंट द नंबर x from 1 less equal to x less than 2. This is equal to 2 when the x belongs to 2 less equal to x less than 3. So up to 3, but it doesn't touch 3. The value of the function is equal to 2. So this is the value. Then 1 to 2, but 2 को टच नहीं करेगा. इसके अंदर जो वैल्यू होगा वो वैल्यू देगा ये 2, एंड इसके 2 to 3 के अंदर जो वैल्यू देगा वो वैल्यू देगा यहाँ पे 2 पे पॉइंट इंक्लूड होगा एंड 3 पे एक्सक्लूड होगा. 3 को टच नहीं करेगा पॉइंट. सिमिलरली फ्रॉम द नेगेटिव साइड देयर आर basically properties. The properties, we read the properties first. So box of x equal to x if x belongs to z. That is, if x is an integer, then box of any integer, this is equal to clearly n. Now box of x plus I, where I belongs to integer, then this gives box x plus I. That means the box function apply only on that function which is not integer. Now box of x plus y, this is equal to greater equal to box x plus box y. Number 4 is box of minus x, this is equal to minus of box x. If x belongs to z, and minus of box x, this is equal to minus box x minus 1 if x doesn't belong to z. That means if we take any number minus 0.2, so if this is a box function, since this is not an integer, so this is equal to minus nearest integer is 0, minus 0 and minus 1 from the property number 5. So minus 0 minus 1 gives minus 1. That means the minus in the negative side, the property of the box function is opposite as
डिफाइंड इन दिस इन अबव एज डिफाइंड इन अबव। सो -1 से कोई नंबर जो है रियल नंबर -1 से 0 से -1 के बीच में जो लाई करेगा उसका वैल्यू होगा -1 से तक वो टच करेगा बट 0 को टच नहीं करेगा। सिमिलरली फ्रॉम हियर -1 टू -2 इफ वी टेक -1 टू -2 इन बिटवीन एनी टू वैल्यू इफ वी 2 पॉइंट को ये टच करेगा दैट इज 2 को साइड जो होगा वो क्लोज होगा। दैट मीन्स इफ वी टेक -1.5 सो इसका जो बॉक्स फंक्शन का वैल्यू होगा वो होगा यहाँ पे -2। Here also two properties left. So property number 6 is that if gx is a function then box of gx is greater or equal to I where gx is greater or equal to then gx is greater or equal to I where I belongs to integer. If box of gx is less equal to I then box of gx gx less equal to I plus 1 where I belongs to z, that is integer. So this is the greatest integer function and their properties. Now we come to the least integer function, or this is also known as ceiling function. The definition says that a function f from R to R is defined as fx equal to x. This is like this. This sign is denoted the least integer function, the integral part of x which is nearest and greatest. तो जो आगे वाला था वहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो डेफिनेशन था वो था नियरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, एंड ये वाला जो होगा ये होगा नियरेस्ट एंड ग्रेटेस्ट। दैट मीन्स इन बॉक्स ऑफ दैट मीन्स स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शंस ऑफ एक्स, इसका जो डेफिनेशन होगा n होगा such that for all n less than x less equal to n plus 1, ये होगा इसका डेफिनेशन। तो ये जो है इसका ग्राफ है। नाउ इफ वी टेक एन एग्जांपल, सपोज इंटीग्रल लीस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ यहाँ पर बोला है 3.32। सो इसका जो लीस्ट फंक्शन होगा वो होगा 4, क्योंकि ये जो फंक्शन ये अंदर किसके अंदर लाई कर रहा है 3 से 4 के अंदर लाई कर रहा है, ये फंक्शन 3 से 4 के अंदर, एंड यहाँ पे लेस इक्वल टू साइन होता है अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन। तो इसका जो वैल्यू होगा वो 4 होगा। नाउ इफ वी सी द ग्राफ एंड ऑल्सो फॉर द minus case there are two properties, we come to that point. Before that we discuss this graph. Now this is the least integer function, that is it is known as ceiling function। मतलब वो जो ऊपर वाला को टच करेगा नीचे वाला का नहीं। एंड जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसको हम लोग कहते हैं क्या, फ्लोर फंक्शन। दैट मीन्स वो नीचे वाला पॉइंट को टच करेगा ऊपर वाला पॉइंट को नहीं। ये इसका दो जो सीलिंग फंक्शन एंड लिस्ट जो सीलिंग फंक्शन एंड जो फ्लोट फंक्शन होता है उसका जो मेन डिफरेंस वो यही है। देखो यहाँ पे 1 0 से 1 तक कोई भी वैल्यू हो तो ये 1 ही वैल्यू देगा, 0 को टच ना करेगा नहीं। 0 को मतलब जो ये जो हॉलो सर्कल है इसका मतलब है एक्सक्लूड द नंबर, एंड ये जो नीड है सॉलिड सर्कल है इसको ये जो इंडिकेट कर रहा है ये इंक्लूड द नंबर। सो 0 से 1 के बीच में जो होगा 0 से 1 के बीच में दैट मीन्स इस साइड में होगा ये एंड 1 होगा क्लोज्ड। ऑपोजिट डेफिनेशन ऑफ द फ्लोट फंक्शन नॉट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नाउ फ्रॉम 1 से 2 के बीच में जो वैल्यू आएगा उसका वैल्यू देगा ये 2, नीचे वाला वैल्यू नहीं ऊपर वाला वैल्यू देगा। एंड देन नेक्स्ट वन इज 3 से 4 के बीच में जो वैल्यू होगा इसके अंदर जो रियल वैल्यू होगा उसका जो लिस्ट इंटीजर वैल्यू होगा वो देगा ये 4, 3 नहीं। एंड सिमिलरली फॉर नेगेटिव साइड ये जो -0 से -1 के बीच में जो वैल्यू होगा रियल नंबर उसका वैल्यू जो होगा लिस्ट इंटीजर फंक्शन का होगा 0। एंड -1 से -2 के बीच में जो वैल्यू होगा ये इसके अंदर जो वैल्यू होगा इसका जो लिस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू होगा वो देगा ये -1। सिंस दिस इज द सॉलिड -1 से -2 तक जो भी वैल्यू है उसका वैल्यू देगा -1, and similarly so on। And there are two properties of this function also। So smallest least integer function of x is equal to x if x is an integer, and least integer functions of x plus I if I is an integer, then this gives least integer function only apply on the number x। So this is the content of this video. If the video is helpful then please give a like to this video, share with your friends and subscribe the channel. Thank you friends, see you again in the next video।